स्टूडेंट मोस्ट वेलकम इन मैथ ब्रीथ एकेडमी। तो आज हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दैट विल बी द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस से बाउंडेड रीजन या अनबाउंडेड रीजन की हम बात करेंगे। सो लेट अस सी अबाउट दिस प्रॉब्लम। So let's write what we have to find the interior, drive set, closure, and set of isolated points of the following set based on the pair of straight lines. Tell which of the following sets are open, closed, bounded, compact, dense, path connected, convex, perfect, and discrete. ये सारी प्रॉपर्टी हमें देखनी है इस सेट के बारे में, जो कि दिस सेट आर द सबसेट ऑफ R2 है। ये R2 के लिए गए हैं। Okay, so we already represented geometrical representation, हम already यहाँ पर mention कर चुके हैं। So here the two straight line with passing through the origin, है ना, this x plus y and x minus 4y. So you will just draw separately, taking x plus y is equals to 0, and this is x minus 4y is just equal to 0, and from here you will get y equals to minus of x, and that will be your y equals to 1 upon 4 of x. Okay. So here it will be this line. This is your x plus y is equals to 0 line, and this is line your x minus 4y equals to 0. Okay, so this is the pair of straight line. When you multiply both the lines, you will get a pair of straight line. तो ये पूरा जो रीजन है, जो स्ट्रेट लाइंस, दोनों स्ट्रेट लाइन को जो सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स हैं, वो हमारे पास सेट के अंदर है। ओके, so let's start writing the इंटीरियर पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट इंटीरियर पॉइंट जो है तुम्हारे पास, वो सारे पॉइंट्स जो कि इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट, इट मीन सारे इंटीरियर पॉइंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे देयर इज नो पॉइंट व्हिच इज एन इंटीरियर पॉइंट, व्हिच इट मींस दैट कि एक कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट तब कहलाता है उस सेट का जब हम एक उसको लेकर एक ओपन डिस्क बनाएं और ओपन डिस्क उस सेट के अंदर पूर्णतः कंटेन हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन द इंटीरियर ऑफ दिस set is empty. Next, we talk about the set of limit points. So A dash. So here all the points will be the limit point, because when we take any point on these lines, okay, and you make a any open disk, and that open disk will contain infinitely many points. So it means that here all the points will be the limit point. So x minus 4y is equals to 0, and that is equals to a set. Okay. Next, we talk about the closure. So we know that this is A closure is just equal to A union A dash, and that will be A again, because A dash and A are same. All the points are the limit point. And then isolated points. तो isolated points हमें find करना है। तो isolated point होता है this is A minus A. It means A dash सेट के वे मेंबर जो कि लिमिट पॉइंट्स नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि लिमिट पॉइंट नहीं है। एवरी पॉइंट इज द लिमिट पॉइंट। So let us see, since this A interior, not every point of the set is an interior point, is empty set, and that is not equals to A, this implies not open. तो जो सेट है this is open set नहीं है। We can also ड्राइव सेट के बारे में देख सकते हैं। तो दिस इज A dash is the subset of A clearly, the all the points are all limit points it belongs to the set. So this implies it is this is closed set. Okay. Next, we talk about the boundedness, because here x is tending to infinity and y is also tending to infinity. This implies not bounded. It is not bounded. ये बाउंडेड हमारे पास नहीं है। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि बाउंडेड नहीं है तो दिस इंप्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट। हमें कॉम्पैक्ट देखना होता है। दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट। एंड देन कॉम्पैक्ट के बाद हमें क्या देखना है, डेंस, डेंस प्रॉपर्टी। ओके, तो सिंस दिस ए क्लोजर, if a set is there, it means A closure is just equal to whole R2 plane. Okay, so this R is not equals to whole R2 plane. A closure, this implies not dense. इसका मतलब सेट हमारे पास डेंस भी नहीं है,
and then about the connectedness. Okay, so it is a path connected because you know that कि हमें कोई भी पॉइंट तक पहुंचना है, मान लो यहाँ से इस पॉइंट से एक पॉइंट पी हमने यहाँ ले लिया और पी से इस पॉइंट क्यू तक पहुंचना है, तो यू कैन इजीली मूव फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन एंड अप टू ओरिजिन, एंड फिर ओरिजिन से इधर हम चले जाएंगे, तो फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो वी हैव अ कर्व टू रीच फ्रॉम पी टू क्यू. It means from any two points, we are taking any two points and we can join by a curve within the set. So that is the path connected. So this is the, here it is set in the path connected, and that implies connected. ठीक है, but not convex. क्यों? क्योंकि if we join this point, this by a straight line, and that straight line outside the set. Okay, तो वो हमारे पास it's not path, it's not convex, it's path connected and connected. And next what we have to do, perfect, and we have to check perfect or discrete. तो परफेक्ट कब होता है? जब सारे के सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट्स होते हैं, और इट मीन दैट, तो यू कैन जस्ट से सिंस ए डैश हमारे पास क्या बन रहा था, पूरा का पूरा ए ही आ जा रहा था, सारे के सारे पॉइंट एज अ लिमिट पॉइंट होते थे, तो ए डैश इज इक्वल टू ए, तो सिंस ए डैश इज इक्वल टू ए, दिस implies ए इज अ परफेक्ट सेट. And since this isolated point is not equals to A, iso is empty is not equals to A, this implies not discrete. This is not discrete. Okay. So this is about the answers of this problem. Okay. When we take in the straight lines only. Okay. Let us see next. Next में क्या है कि we have taken x plus y and x minus 4y not equals to 0. मतलब other than straight line, मतलब ये दो straight line pair of straight lines हैं. This is, you know that कि this is your x minus 4y equals to 0, and this is x plus y equals to 0 line. तो इन दो स्ट्रेट लाइन के अलावा जितने भी पॉइंट हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर सेट. ओके, तो लेट्स आंसर द प्रॉब्लम, आंसर द थिंग. तो पहले हमें इंटीरियर देखना है, तो वी कैन जस्ट सी कि एवरी पॉइंट ऑफ दिस सेट विल बी द इंटीरियर पॉइंट, है ना. तो ए इंटीरियर इज ए अगेन बिकॉज हियर बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड, so it's every point is the interior point. Okay, next we can just say limit points. तो लिमिट पॉइंट जब हम ए डैश की बात करेंगे, तो ऑल द रीजन्स, ऑल द पॉइंट एंड दिस बाउंड्री पॉइंट आल्सो इंक्लूडेड इन द लिमिट पॉइंट. इट मींस ए डैश विल बी होल R2 plane. Is set के points as well as these points on the line also will be the limit point. Okay, next we can just have the closure. The A closure is just equal to R2 because you know that this is your A union of A. Okay, next isolated point. So here isolated points का जो set है, that will be the empty set clearly. So since this is A interior is just equal to A, this implies open set. A is open set. So this is a open. Okay, next अगर हम A since A dash is not a subset of A, this implies not closed, not closed. Okay, closed नहीं है, और clearly not bounded, bounded भी नहीं है. So not bounded. If it's not bounded, this implies not compact, है ना, कॉम्पैक्ट भी नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्या हमें देखना होता है, कॉम्पैक्ट के बाद हमें डेंस देखना होता है. डेंस, ओके, डेंस पाथ कनेक्टेड. तो सिंस यहाँ पर क्लोजर जो है, ए क्लोजर इज इक्वल टू होल R2, so this implied A is a dense. ठीक, it is dense. Okay. Next, it's not path connected because
because we can not join any, because यहाँ पर origin नहीं है, origin है नहीं, so we can not move any point from the one region to another region. We will not get any, so any path to reach from one region to another region, joining the points. Okay, so clearly you can just say not path connected, connected, and also not connected, and not connected, or also you can say not convex. अगर path connected connected नहीं है तो convex तो होगा ही नहीं, कि we will not, so not convex. Okay, so next perfect और हमें discrete देखना होता है लास्ट में. What we have to take the property, check करना है हमको. Let's see, connected, path connected, and then convex के बाद आपको perfect और discrete देखना है. So since clearly you can just say it's not perfect, A dash is not equals to A. This implies not perfect. And since this is isolated points, for the discrete, this isolated point, it means every point of the set is an isolated point for the discrete set. But यहाँ पर ऐसा नहीं है, so it means it is not discrete. It's not discrete. Okay, so these are answers for this set. Okay, next 37, this x plus y into x minus 4y is less than 0. तो वो रीजन लेना है जिसमें, तो हम करते क्या है कि कौन सा रीजन देखना है, उसके लिए हम कोई टेस्टिंग पॉइंट ले लेते हैं. जैसे कि एक चीज ध्यान रखना, टेस्टिंग पॉइंट फ्रॉम एनी रीजन. जैसे मान लो इस रीजन का हमने लिया था कोई टेस्टिंग पॉइंट, तो हमने मान लो यहाँ पर कहीं मौजूद होगा हमारे पास 0,1, एंड 0,1 समवेयर इज हियर. तो अगर हम इसको पुट करेंगे 0, दिस विल बी इट मीन सेटिस्फाइड. इसका मतलब दिस होल रीजन विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. सिमिलरली वी कैन चेक वन बाय वन. तो यहाँ पर 0,1 लिया था या 1,0 ले, 1,0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब ये रीजन हमारे पास नहीं आएगा. नेक्स्ट इसी तरीके से -1,0 will also not satisfy, so it will be not come. And similarly the if we take 0, -1 which will satisfy this equation and it will be the region. तो इसका मतलब है इस सेट को सेटिस्फाई करने वाला या इस इक्वेशन को, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला रीजन कौन सा है, ये वाला है और ये वाला रीजन. तो यही जो पॉइंट्स होंगे, ये हमारे पास सेट के पॉइंट्स हैं. दीज आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट की. ओके, so let's start writing the interior. A interior will be simply all points will be the interior points. Okay, so this set A again. Okay, next ड्राइव सेट के अंदर हमारे पास इक्वलिटी भी आ जाएगी. ऑल द बाउंड्री पॉइंट विच मेकिंग दिस रीजन विल आल्सो द लिमिट पॉइंट. तो दिस x, y such that the y is less or equal to 0. And next closure की अगर हम बात करें तो this is A closure is just equal to A union A dash, and that will be equal to A dash. And isolated point will be, no point will be the isolated points within the set. So this is empty set. So since A interior is just equal to A, this implies open set. This is open set. Okay. Since this A close A dash is not with the subset of A, this implies not closed. It's not closed. Okay. Closed नहीं है. Closed नहीं है. So next we can also talk closed नहीं. Boundedness, it is not bounded. Also not bounded. So this implies not convex. Sorry, not compact. Okay, since a closure is not equals to R2, this implies not dense. So dense भी नहीं है. It is also not path connected because बाउंड्री नहीं है, और बाउंड्री नहीं है इसका मतलब है इसमें जो ओरिजिन है ना 0, वो नहीं. तो इसका मतलब जो अपर रीजन है, उस अपर रीजन से हम लोअर रीजन के अंदर हम किसी कर्व के थ्रू नहीं जा सकते. देयर नो कर्व इट एग्जिस्ट. So it means it is not path connected. It is not path connected.
नॉट पाथ कनेक्टेड। ओके, तो होप की चीजें समझ में आ रही हैं आपको। इट इज कि कैसे हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो 0,0 ओरिजिन है ना, वो हमारे सेट के अंदर नहीं। एंड आल्सो इट इज नॉट कनेक्टेड, है ना, ये कनेक्टेड भी नहीं, तो नॉट कनेक्टेड और नॉट कॉन्वेक्स एंड नॉट कॉन्वेक्स। ओके, since this is a dash is not equals to a, so this implies not perfect. And since this is a dash is not equals to, this is not perfect, since this is a ये isolated of a, है ना, is not equals to a, this implies not a, है ना, तो इसका मतलब ये डिस्क्रीट भी नहीं है और ना ही परफेक्ट है। Okay, so this is the answer about the 37th problem. Let us see. अब इसके अंदर बाउंड्री इंक्लूड कर लिया है, x plus y into x minus 4y is less or equal to 0. So we have taken boundary है, तो आइए फटाफट आंसर लिखते हैं लोग। तो फर्स्ट the interior, अब इंटीरियर के अंदर बाउंड्री हट जाएगी, it means that this is x comma y such that this is x plus y and this is x minus 4y is less than 0, because बाउंड्री पॉइंट हमारे इंटीरियर पॉइंट्स नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट, a dash will be a again, and a closure will be equal to a, and this is isolated point is just equal to empty, and since a interior is not equal to a, this implies not open. Since this is a dash is a subset of a, this implies closed. Okay, closed हो गया, not bounded implies not compact, है ना। Since this is a closure is not equal to R2, this implies not dense. ओके, तो फटाफट हम आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन के, है ना, नॉट टेन। एंड अब यहाँ पर ओरिजिन आ गया, ओरिजिन आ गया तो इस पाथ कनेक्टेड, है ना, पाथ कनेक्टेड, पाथ कनेक्टेड दिस इंप्लाइज कनेक्टेड, बट कॉन्वेक्स अभी भी नहीं, बट नॉट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सिंस दिस a dash is just equal to a, this implies a is perfect, है ना। एंड दूसरा तुम्हारे पास आइसो ऑफ a is not equals to a, this implies not discrete, this is not discrete। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? इसमें अब दूसरा रीजन लिया गया है, दैट इज अपोजिट रीजन। तो लेट्स राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो यहाँ पर अपने पास राइट साइड वाला रीजन और लेफ्ट साइड वाला रीजन, तो वी कैन नेक्स्ट तुम्हारे पास हेयर दिस ए डैश विल बी पॉइंट्स ऑफ द रीजन एज वेल एज द बाउंड्री पॉइंट। So we have this is x minus 4y is greater or equal to 0. This is your it dash मतलब drive set. With each related point it will be equal to input. So since this is a interior, it just equal to a, which implies open set is open set. But यहाँ पर जो limit points है other than the members of the set, so it means this a dash is not a subset of a. This implies not closed and also not bounded. This implies not compact, है ना, कॉम्पैक्ट भी नहीं है। और कॉम्पैक्ट नहीं है तो इसके बाद हम डेंस देखना होता है, तो डेंस भी नहीं, ए क्लोजर इज नॉट इक्वल टू होल R2, then this implies not dense, you know। ओके, फिर लेट अस सी अबाउट द कनेक्टेड एंड पाथ कनेक्टेड। तो क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट पाथ कनेक्टेड एंड नॉट कनेक्टेड आल्सो, and this implies not convex, convex नहीं है। since ये जो आपका a dash है that is not equals to a, which implies not perfect, and since isolated a is not equals to a, which implies not discrete। okay, so this is the answer about the problem number 39। okay, next, बहुत इजी है, चीजों को हम इसलिए फटाफट लिख दे रहे हैं ताकि आल्सो प्रैक्टिस ओनली कि आंसर इसके होंगे क्या एक्चुअली। आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं।
So this is solution of the problem number 40. तो इंटीरियर मतलब बाउंड्री पॉइंट्स हमको नहीं लेने, तो इट मीन दैट हियर वी विल exclude the boundary point. A interior is just equal to the points x comma y such that x plus y and this is x minus 4y is greater than 0. ये सारे पॉइंट्स हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे. ओके, ये मतलब कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर ले लें उसको लेकर हम एक ओपन डिस्क बना सकते हैं. दैट ओपन डिस्क इज कंटेन्ड totally in the set. So that the point is called interior point and such points का collection is called interior of the set. नेक्स्ट है ड्राइव सेट की. अगर हम बात करते हैं तो लिमिट पॉइंट क्या होता है कि हमारे पास कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट कहलाता है इफ वी मेक अ ओपन डिस्क एनी ओपन डिस्क कंटेनिंग दैट पॉइंट कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ दैट. तो यहाँ पर जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं उनको लेकर कोई भी ओपन डिस्क बनाए दैट ओपन डिस्क आल्सो बिलोंग्स टू द सेट एंड देन that is a region and it is 1% भी of the region अगर उस open disk के अंदर include है that contains infinitely many points of the set. So this A dash will be A again all the points uh, this region and that called boundary points जो line के ऊपर points हैं वो भी, तो वो सारे के सारे points हमारे पास ड्राइव सेट की या फिर लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे. तो दिस इज योर x minus 4y greater or equal to 0. It means this is A again. नंबर थर्ड, ए क्लोजर की बात करते हैं. तो ए क्लोजर क्या होता है? ए यूनियन ए डेल एंड दैट विल बी ए अगेन. ओके, नेक्स्ट है आइसोलेटेड पॉइंट. आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है? सेट टू वे मेंबर जो कि लिमिट पॉइंट नहीं. तो ए माइनस ए डेल एंड दैट इज योर इंटीरियर. So since A interior is not equal to A, this implies not open. तो इसका मतलब ओपन सेट नहीं है. बट ड्राइव सेट तो देख पा रहे हैं सिंस लिमिट पॉइंट सेट के मेंबर थी the subset of A, this implies closed set. Okay, so it is a closed set and not bounded. So this implies not compact. Compactly closed and bounded होना जरूरी. If and only इसका रिजल्ट होता है closed set plus bounded, this implies compact. If and only it is compact. Okay, so here not bounded it means not compact. Okay, closed तो है but it is not bounded इसलिए compact नहीं है. अब आते हैं डेंस की बात करते हैं. सिर्फ एक क्लोजर, अच्छा डेंस के लिए एक क्लोजर जिस भी सुपर सेट से लिया जाता है जिसका भी वो सबसेट होता है तो एक क्लोजर उसी सब सुपर सेट इक्वल हो जाए. तो यहाँ पर जो हम सेट्स ले रहे हैं वी आर टेकिंग फ्रॉम R2 प्लेन है ना. तो इट मींस दिस ए क्लोजर शुड बी इक्वल टू R2 फॉर द डेंस टू बी डेंस. बट यहाँ पर ए क्लोजर इज नॉट इक्वल टू R2, दिस इंप्लाइज नॉट डेंस. तो इसका मतलब सेट हमारा डेंस नहीं. ओके, नेक्स्ट क्या देखना होता है हमको? व्हाट वी हैव टू चेक. डेंस के बाद पाथ कनेक्टेड, कनेक्टेड, कॉन्वेक्स, परफेक्ट एंड डिस्क्रीट. ओके, तो यहाँ पर बिकॉज वी आर इंक्लूडिंग द बाउंड्री इट मीन इट इज अ पाथ कनेक्टेड है ना. तो पाथ कनेक्टेड और पाथ कनेक्टेड जो सेट होते हैं वो कनेक्टेड भी होते हैं. दिस इंप्लाइज कनेक्टेड बट नॉट कॉन्वेक्स. यहाँ पर कॉन्वेक्स नहीं है. ओके, इट इज नॉट कॉन्वेक्स बिकॉज यू कैन जॉइन. ये पॉइंट है स्ट्रेट लाइन हमारे पास सेट के बाहर चली गई. since A dash is just equal to A, drive set should equal A के ही है तो it is perfect set. A is a perfect set. Okay, it is a perfect set. Okay, and since isolated points की अगर हम बात करें isolated of A is equal to and that is not equal to A है ना. So this implies not discrete. ये इसका मतलब डिस्क्रीट नहीं. ओके, तो दीज आर आंसर्स फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेयर वी टेक स्ट्रेट लाइन है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो उनका जो हमारे पास उनसे द्वारा जो रीजन्स बनते हैं या फिर हम उसके पोर्शंस को लेते हैं तो वो उनके उनसे रिलेटेड अगर तुम्हारे पास सेट है तो इजीली कैन आंसर लाइक है ना. ओके, तो आई होप कि आपको आंसर समझ में आए होंगे. यू हैव आंसर्ड ऑल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि हमारे पास इंटीरियर कैसे निकालते हैं, कैसे हम देखते हैं लिमिट पॉइंट्स को है ना.
तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ रहे हैं और आप इनको कर पा रहे हैं इजीली, है ना। आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि एक्चुअली हम कैसे चीजों को देखते हैं और कैसे इजीली एक सेट गिवन है, किसी भी सेट का सबसेट गिवन है, तो उसके रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन को कह सकते हैं। ओके, तो आई होप सो कि दिस लेक्चर इज बेनिफिशियल फॉर यू, आपको समझ में आ रहे हैं और आपके जो मैथमेटिक्स जर्नी है उसमें हेल्पफुल हो रहे हैं। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, बाकी और भी स्टूडेंट तक आप उनको शेयर करिए, ताकि हम और भी स्टूडेंट को मेरा जो नॉलेज या जो मैथमेटिक्स है कैसे हेल्प। थैंक यू सो मच।